Right. So continuing with the acute leukemias, today I will be discussing ALL. I like them lights a little bit dim, so I hope you don't mind. You have to pay attention to the text only. Okay. ALL is your acute lymphocytic leukemia. It is a, neoplasm of lymphocytes basically. So lymphocytes we know are of two types: B lymphocytes and T lymphocytes. So it is either B type or T type, and B type is way more common. BALL is more common than TLL, and you have to remember that point, okay? Next point that you have to remember is that it is primarily a disease of children. It is primarily a disease of children. It's a childhood leukemia. ALL is a childhood leukemia. If you remember AML, you know that most of the cases, 85 to 90% of the cases of AML are in adults. But ALL, on the other hand, is a disease of childhood. It is in the pediatric population. 85% of the cases are under 6 years. There is a slight male preponderance also. So you have to remember it is in males and younger population, less than pediatric population, less than 6 years, most of the cases, right? And like I said, BLL is more common than TALL. Clinical symptoms. So this is these are the things that are common for both the ALL, B or T, which is there's an abrupt onset. Patient might have joint or extremity pains. Patient can have non-specific symptoms. These are non-specific because these can arise in all of the leukemias, right? So fatigue, pallor, easy bruising, bleeding, fever, dyspnea, dizziness, weight loss. Now, lymphadenopathy, splenomegaly, hepatomegaly can occur in all the leukemias. But CNS and mediastinal involvement or even testicular involvement is very characteristic for ALL. Okay, so this is we are discussing both B and T combined. Okay, now diagnostic approach. First, you will see the medical history and the physical examination of the child. Lab, of course, CBC, PBS, coagulation studies, serum chemistry, in which you'll do RFT, HF, and LFT, electrolytes, calcium, phosphate, uric levels, and LDH, chest X-ray to see mediastinal mass, lumbar puncture, the CSF examination for CNS involvement, bone marrow aspiration biopsy to see bone marrow involvement. Now, normocytic normochromic anemia, TLC, can be decreased, normal, or maybe increased. Of course, you will see lymphoblast. I hope that you remember the difference between a lymphoblast and a myeloblast that I discussed in the last video. Granulocytopenia, because just like in acute AML, just like in myeloid leukemia, the other cell lineages will be decreased. So you will have granulocytopenia, so patient will be prone to infection. You have thrombocytopenia, platelets will be decreased, so you will have bleeding tendencies in the patient. Now, bone marrow examination, of course, bone marrow will be hypercellular. Why? Because it is packed with the neoplastic lymphoblast. Okay, usually densely packed with leukemic blasts comprising more than 90% of the all nucleated cells. Myeloid precursors are decreased. The rest of the myeloid precursors are decreased. Megakaryocytes, which are platelet precursors, are decreased. Mitotic figures might be seen, which are more in TLL and than the BLL, right? Now, there is some differences between the lymphoblast of a BALL and the lymphoblast of a TALL. In BLL, they have varied appearance, where they can be all of them can be small cells or they can be large cells. Just remember that they can be small or they can be large. Okay. In TLL, as compared to lymphoblast, there is more convolution in the nuclei and there is more hypochromasia in the nuclei. These are the 2 points that you have to remember. Okay. Now, again, these are the differences that I talked about in the video of AML as well. So you have a myeloblast, which has a more cytoplasm. Now, cytoplasm में दो चीजें हैं, granules हैं for myeloblast and और rods हैं. Fine chromatin है and prominent nucleoli है. ठीक है? Then is lymphoblast as compared to the, and it is a large blast. AML is a large blast. Myeloblast is a large blast, right? Lymphoblast is a smaller blast. It has scant cytoplasm and it is a dense chromatin. The lymphocyte वाली जो chromatin होती है ना, एक normal lymphocyte वाली भी, that is a densely packed chromatin. So lymphoblast में जो chromatin, that is a dense chromatin. It can have indistinct nuclei, but it can also have nuclei. 1 or 2 nuclei can be seen in lymphoblast as well. And there are no rods or granules in the cytoplasm. So I hope you remember the difference between a myeloblast or a lymphoblast, right? But usually when we have just PBS or bone marrow, we don't give AML or ALL. We might suspect it on the basis of patient's age or gender or even
we've seen this like male preponderance. We know that it's in the ALL is in the kids, and we know कि CNS testicular mediastinal involvement ज़्यादा है ALL में, so we can suspect it, but we can't confirm it without immunophenotyping. But for example, in a government setting, in a medical college, for example, and hospital, you only have PBS and bone marrow, right? You do not have flow cytometry. You can't really say कि AML है या ALL है. So you only give the diagnosis of acute leukemia, and then you can query, you can give that it might be ALL or AML depending on what the history of the patient is, and then you advise flow typing, flow cytometry, okay, immunophenotyping, because AML is not just one entity. There are many type of acute myeloid leukemias like we discussed yesterday, and in ALL also you have FAB classification as well as the WHO classification. You have those here also. Okay, next classification of again lymphoblastic leukemias. So FAB, according to, and of course you can do the cytochemistry. Like I said, myeloperoxidase and NAC and Sudan black blue are in myeloblast positive, but in lymphoblast they are negative. But acid phosphatase, if you remember from yesterday's video, is more in ALL, in the lymphoblast, and not positive in the myeloblast. And past shows block positive in the lymphoblast, right? But it is pinpoint positivity in the myeloblast, and they are more than, the criteria here is FAB classification more than 30% blast in bone marrow or blood. WHO classification is depending on the clinical presentation, morphology, or cytochemistry, immunophenotyping, flow, cytogenetics, molecular genetics, which is some translocations or aberrations or some mutations, right? And again, the criteria is more than 20% blast. Now again, FAB classification classifies ALL into L1, L2 and L3. If you remember, we had M1 जो AML वाला था वो M0 से शुरू हो रहा था, M7 तक जा रहा था, ठीक है, और M0 without differentiation, undifferentiated, and then M1 और M2 with and without maturation थे, और M3 प्रोमाइलोसिटिक था, M4 माइलोमोनोसिटिक था, M5 मोनोसिटिक था, M6 एरिथ्रॉइड था, और M7 मेगाक्यूरोसिटिक था. So similarly, so that was myeloid wala, right? Sorry. So that was myeloid wala. Now we're going to, this is, ये हमारा ALL वाला है, L1, L2 and L3. अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि ALL में चाहे वो जो BLL है उसमें थोड़ा साइज का वेरिएशन होता है, स्मॉल ब्लास्ट भी हो सकते हैं, लार्ज ब्लास्ट भी हो सकते हैं. ALL में जो L1 है वो स्मॉलर ब्लास्ट होते हैं और मोर कॉमन यही होते हैं, और इनमें आपको साइटोप्लाज्म नहीं मिलता. अब ये याद कैसे रखना है कि माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में, माइलोब्लास्ट में तो बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलता है जिसमें ग्रैन्युल भी होती है और भी होती है, पर लिम्फोब्लास्ट में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता. और ज्यादा लिम्फोब्लास्ट कौन सा कॉमन है? L1 वाला. L1 वाले में कोई साइटोप्लाज्म नहीं मिलता. न्यूक्लियाई मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है, और एनसी रेशियो हाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलर ही है पर ये ज्यादा कॉमन है, और ये छोटा वाला है. अब L2 है, थोड़ा लार्ज है, और उसमें सब आ जाता है, साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा आ गया, न्यूक्लियलाई भी आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेक्यूल्स भी आ गए, ठीक है, पर ये कम कॉमन है. फिर आता है A3 जो सबसे लार्ज है, ठीक है, और ये तो बहुत रेयर है, और अगर ये वाले L3 वाले मिल रहे हैं तो आपका वर्स प्रोग्नोसिस है. और ये एक बात रखना कि इनमें साइटोप्लाज्मिक वेक्यूलेशन आ जाती है. आई होप यू रिमेम्बर नाउ कि L1 वाला सबसे छोटा होता है, इसमें न्यूक्लियोलाई भी नहीं मिलते, एनसी रेशियो भी हाई होती है, और साइटोप्लाज्म बिल्कुल ही नहीं मिलता, और सबसे ज्यादा कॉमन ही है. फिर L2 वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा साइटोप्लाज्म भी आ जाता है, थोड़े न्यूक्लियोलाई भी आ जाते हैं, पर बाकी सब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इरेगुलर हो सकती है पर वेरिएबल है 20-25% केसेस में. और सबसे गंदा वाला वर्स्ट प्रोग्नोसिस जो सबसे लार्ज वाला है और बहुत रेयर है, 1-2% केसेस में मिलता है, वो है L3, ठीक है. इसमें बस एक चीज में याद रखिए, इसमें तुम्हें दिख रहे हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर वेक्यूल्स, ये जो व्हाइट व्हाइट डॉट्स है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर वेक्यूल्स दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियस की आउटलाइन जहाँ पे खत्म हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर वेक्यूल्स दिख रहे हैं, ठीक है. तो ये तुम्हें याद रखना है. और न्यूक्लियोलाई भी इनमें प्रोमिनेंट है, ये देखो न्यूक्लियोलाई, दीज आर, ये न्यूक्लियस के अंदर है ना न्यूक्लियोलाई. सॉरी गाइस, आई एम लिटिल बिट सिक स्टिल. नाउ BLL और TLL होता है, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं. ऑल्दो हमने एक्यूट ल्यूकेमियाज, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस डिस्कस कर लिया है, इतना ही है, बट थोड़ी सी स्पेसिफिसिटी है BLL और TLL में. और ये तो मोर्फोलॉजी वाला था क्लासिफिकेशन फैब वाली, फिर WHO की क्लासिफिकेशन मोर्फोलॉजी वाली भी है, और फिर रीअरेंजमेंट्स वाली. जैसे एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमियाज में जेनेटिक रीअरेंजमेंट्स वाली नई क्लासिफिकेशन है पूरी, वैसे ही एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियाज में भी वो है, ठीक है. अगेन, तो BLL जब भी ब्लास्ट वर्ड आता है तो वी नो के वो प्रिकर्सर्स वाला है,
थोड़े पुराने वाले सेल्स यानी कि प्रोजेनिटर्स का है। ठीक है, ब्लास्ट सेल्स कहाँ है? बोन मैरो में और ब्लड में। ओकेजनली प्राइमरी एक्स्ट्रा नोडल साइट भी हो सकती है। एक्स्ट्रा नोडल साइट सीएनएस, टेस्टिस और मीडियस्टल मास। प्राइमरली डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, ज्यादातर केसेस लेस देन 60 और 80 to 85% BALL वाले, क्योंकि लिम्फोसाइट बी होता है और टी होता है, और BALL वाले ज्यादा कॉमन है। ठीक है, हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, डाउन सिंड्रोम के साथ AML भी एसोसिएटेड था, ALL भी एसोसिएटेड है। रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सपोजर टू केमिकल्स और स्मोकिंग वगैरह। बोन मैरो इज इन, क्योंकि स्मोकिंग ऑफ कोर्स तुम ये सब बोलोगे कि ये सारे तो विद एज आएंगे ना, ये सारे तो दैट मीन्स कुछ केसेस हायर एज ग्रुप में भी हैं। बाय डेफिनेशन बोन मैरो तो सब केसेस ऑफ BALL में इन्वॉल्व है, ब्लड भी ऑफ कोर्स इन्वॉल्व होगा, एक्सट्रानेडल साइड भी इन्वॉल्व है। कौन सी? लिम्फ नोड तो ऑफ कोर्स, लिम्फ नोड लिवर और स्प्लीन तो हर ल्यूकीमिया में कॉमन है, बट CNS और टेस्टिस और मीडियस्टल स्पेशली ALL में हो जाता है। ठीक है, बाकी स्किन और सॉफ्ट टिश्यू बोन भी इन्वॉल्व हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, अब्रप्टली पेशेंट को जॉइंट और एक्सट्रीमिटीज में पेन, सडनली पेशेंट, एक बच्चा जब प्रेजेंट करता है ना लिम्फोडिनोपैथी और वो भी बायलेटरल, तो वो हमेशा रिस्क होता है हमारे पास FNAC के लिए। ऐसा वाला पेशेंट जब भी आता है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाकी स्प्लीनोमेगाली, हेमेटोमेगाली हगेज में होती है और CNS इन्वॉल्वमेंट। बाकी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, फटीग, पिलर, ब्रूजिंग, ब्लीडिंग, फीवर, डिस्निया, ये सब टाइप ऑफ ल्यूकीमिया में मिलेगा। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशन वही रहेंगी जो हमने कॉमन पढ़ा था, जो BLL या TLL में जो हमने शुरू में पढ़ा था। अगेन पेरिफेरल स्मीयर वही है, ये भी लिम्फोब्लास्ट का। ALL का लिम्फोसाइट L1 थोड़ा ज्यादा है। ये हैंड मिरर एक वेरिएंट होता है, हैंड मिरर वेरिएंट होता है ALL का, जिसमें यूनिपोलर साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूशन मिल जाती है कभी कभी ब्लास्ट के अंदर। दिस इज इम्पोर्टेंट मोर फॉर PG परस्पेक्टिव, बट यू शुड ऑल्सो नो इट। ये कभी कभी ब्लास्ट के अंदर, ये जो देखो हर ब्लास्ट में एक प्रोट्रूजन है, तो इसे हैंड मिरर वेरिएंट कहते हैं। जैसे फीमेल्स का हैंड हेल्ड पुराने जमाने में मिरर होता था, ऐसे होता था, हैंड हेल्ड मिरर होता था। ठीक है, तो अगर आपने फोटो देखी हो किसी हैंड हेल्ड जो मिरर होते हैं ना, तो वैसा है, इसलिए इसको बोलते हैं कि हैंड मिरर वेरिएंट है ALL का, जिसमें एक यूनिपोलर, एक सिंगल साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूशन मिलती है ALL में। ठीक है, तो वो मेरो बायोप्सी है वो। अब जो लास्ट स्लाइड है ALLs की, वो है प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स आपको दोनों को याद रखना है, AML और ALL वाले, और ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब सबसे पहले फेवरेबल क्या है? अगर काउंट कम है, उधर भी यही था, AML में भी फेवरेबल कम है, एज कम है तो फेवरेबल है। उधर क्या था, अगर थोड़े एडल्ट की पॉपुलेशन थी क्या, पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एज हो जाती, बच्चा बिल्कुल ही न्यू बॉर्न हो गया, या थोड़ा सा बड़ी उम्र वाला बच्चा, क्योंकि ये डिजीज ही बच्चों का है ना, 80 to 85% जो केसेस होते हैं बच्चों में होते हैं। तो बहुत एक्सट्रीम एज वाले अगर बच्चे हो गए, बहुत ही न्यू बॉर्न और थोड़ा बड़ा वाला बच्चा हो गया, ज्यादा 10, 11, 12 साल वाला, तो अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। फीमेल्स में फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, ऑल्दो मेल में प्रिपोंडेरेंस है, पर ज्यादा पूरा अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। अगर ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है, नोड, लिवर, स्प्लीन, टेस्टिस, CNS, ये सब में अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस। ऑफ कोर्स मोर ऑर्गन्स इन्वॉल्व, मोर फैब की मोर्फोलॉजी अगर L2 की तरफ है तो अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। इम्यूनोफिनोटाइप अगर प्री बी या टी है फिर भी चलेगा, पर अर्ली T सेल प्रिकर्सर्स होते हैं तो वो अनफेवरेबल है। प्री और अर्ली का क्या मतलब है? जब प्रॉपर एक बी लिम्फोसाइट ब्लास्ट से बनता है या फिर टी लिम्फोसाइट ब्लास्ट से बनता है, तो उसके आता है पहले प्री बी सेल आता है, प्री टी सेल, मतलब साथ साथ पैरेलल बता रही हूँ। बी वाले ब्लास्ट से लिम्फोसाइट का बनना, बी लिम्फोसाइट का बनना, और टी वाले ब्लास्ट से एक नॉर्मल टी लिम्फोसाइट का बनना। तो रास्ते में क्या आता है? प्री बी या प्री टी, फिर प्री प्रो बी, प्री प्रो टी, फिर मिच्योर से पहले अर्ली पी या अर्ली टी आता है। ठीक है, तो जस्ट टू रिमेम्बर, इट इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, पीजीज के लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अर्ली जो टी है अगर प्रिकर्सर है, अगर उसका वाला प्रोलिफरेशन है तो वो अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। हाइपर डिप्लॉइडी अगेन मोर देन 50 है तो अनफेवरेबल, सॉरी फेवरेबल प्रोग्नोसिस है, बट लेस देन 40 क्रोमोसोम्स है तो अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस है। टाइम टू रिमिशन अगर लेस देन 8 हो गया ठीक है, बट अगर ज्यादा, एक महीने से ज्यादा लग रहा है, तो दैट वुड बी एन अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस। दैट वाज ऑल अबाउट योर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमियास। बट हाँ, ऑफ कोर्स जेनेटिक रीअरेंजमेंट की भी क्लासिफिकेशन है, उसमें डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होते हैं, बट that would be a little too complicated for undergraduate perspective, so that's why I have not included them here. All the best for your exams. I'll try to put chronic leukemias on videos as soon as possible.